Hello student, welcome back to another video of St. Michael's Academy e-learning class. I am Shree Ram teaching you accountancy of class 11. Today I am going to start a new chapter titled Theory Base of Accounting. So let's start. Accounting principles, concepts and conventions commonly known as generally accepted accounting principles or GAAPs are the basic rules that define the parameters and constraints within which accounting operates. जो हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, कॉन्सेप्ट्स है या जो भी कन्वेंशंस हैं, जिसे हम जनरली क्या बोलते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और इन शॉर्ट वी कैन से GAAPs. ये क्या है? ये एक बेसिक रूल्स है जो हमें बताता है कि जो भी हम अकाउंटिंग करेंगे, जो भी अकाउंटिंग करने के जो प्रोसीजर होंगे, उसको करने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट एंड रूल्स होगा. वो हमें बताता है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन. These principles are the theory base of accounting on the basis of which financial statements are prepared. In other words, they are the guidelines for preparing the financial statements. Nowadays, every business is generally related to many individuals and institutions. For example, creditors, banks, insurance companies, employees, investors, tax departments, etc. It is therefore essential that financial statements should be prepared according to certain rules, procedure and conventions. Suppose different accountants prepare the accounts of different enterprises. If all the accountants, without adopting generally accepted principles, prepare the accounts by their own methods, then the accounts will neither be reliable nor the results be accurate. If the accountants do not adopt the generally accepted accounting principles, the accounts and financial statements of different organizations will not be comparable. So in other words, we can say that accounting is a subject in which the interest of various interested parties are involved. The work of accounting will be understandable to all the persons and institutions only when it is done on the basis of standardized terminology, principles and elements. These fundamental elements mean accounting principles, accounting concepts and accounting conventions. The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) has issued accounting standards to standardize the accounting practices adopted to prepare financial statements. The Companies Act 2013 has notified accounting standards to be followed by companies in preparing their financial statements. It is necessary to adopt principles in accounting so that the business transactions are recorded in a proper manner and the work of accountancy has universal acceptability. Accounting principles are generally accepted all over the world since they have been developed by the accountants through their experiences and requirements. Accounting principles are affected by the government rules and regulations and the opinions of professional institutions, such as Institute of Chartered Accountants of India. Thus, they are bound to change with the passage of time so that the presentation of financial statements can be made more meaningful and useful. Every science, whether a natural science or a social science, is based upon some principles and rules. To study that science, we must know the principles and rules that govern it. The American Institute of Certified Public Accountants has defined an accounting principle as a general law or rule adopted or professed as a guide to action, a settled ground or basis of conduct or practice. It means जो हमारा अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स है, उनके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, ये एक लॉ है या एक रूल है जिसे फॉलो करके हम क्या करते हैं, अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं. Accounting principles are the rules of action or conduct adopted by accountants universally
while recording accounting transactions. They are the norms or rules which are followed in giving accounting treatment to various items of assets, liabilities, expenses, incomes, etc. For example, inventory should be valued at lower of its cost or net realizable value. Fixed assets should be depreciated over their useful life. Accounting principles are the basic or fundamental propositions generally accepted by accountants as a set of accounting principles based on which transactions are recorded and financial statements are prepared. These principles are classified into two categories. First is accounting concepts and second is accounting conventions. ये जो हमारा एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो क्या है, ये हमारा एक रूल है या एक गाइडलाइन है जिसे फॉलो करके कोई भी अकाउंटेंट क्या करते हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं या जो भी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना होता है, तैयार करना होता है, वो उस रूल्स को, उस प्रिंसिपल्स को फॉलो करके बनाते हैं, तैयार करते हैं। सो ये जो प्रिंसिपल्स है उसे हम कैटेगराइज करते हैं दो ग्रुप में। वो कौन कौन से हैं? पहला है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और दूसरा है अकाउंटिंग कन्वेंशन। सो नाउ नेक्स्ट जो अब हम देखेंगे दैट इज़ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। या अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होता है? सो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर द बेसिक अजम्पशंस और फंडामेंटल प्रोपोजिशंस within which accounting operates. They are generally accepted accounting rules based on which transactions are recorded and financial statements are prepared. It is important to follow the accounting concepts because it enables the users of financial statements to understand them better and in the same manner. Accounting concept. अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होता है? सो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या है? एक बेसिक अजम्पशंस हैं जिसे हम धारणा बोलते हैं। तो ये एक धारणा है जो भी अकाउंटेंट जो अकाउंटिंग करता है वो कुछ एजम्पशंस, कुछ धारणा करके अकाउंटिंग करता है, उसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। जिससे क्या होगा, वो रिलायबल होगा और सभी कोई उसे ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज दैट इज़ अकाउंटिंग conventions. Accounting conventions are the outcome of accounting practices or principles being followed by the enterprises over a period of time. Conventions may undergo a change with time to bring about improvement in the quality of accounting information. My dear student, here we are having the term that is accounting conventions. क्या है ये conventions? So in Hindi you can say conventions means परंपरा, प्रथा और as a tradition. So अकाउंटिंग कन्वेंशन ये एक परंपरा है जो कि हमारे बिजनेस इंटरप्राइजेस में लोग फॉलोअप करते हैं। जो एक ये लगातार प्रथा चले आ रही है जिसे हम फॉलोअप करते हैं, वो हमें कहलाता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। और ये क्या है? ये एक चेंजेबल है, फ्लेक्सिबल है, जो कि टाइम के साथ इसमें हम चेंजेस ला सकते हैं ताकि हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस में क्या हो सके, इम्प्रूवमेंट हो सके। सो दिस इज़ आवर अकाउंटिंग कन्वेंशन। नाउ नेक्स्ट जो हम देखेंगे दैट इज़ फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड. Accounting principles are man-made and therefore they do not stand and scrutiny like the principles of natural science. They are the best possible suggestions based on practical experiences. They are recommended for use by all enterprises to ensure uniformity and understandability. ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ये मैन मेड होते हैं और ये क्या है, ये एक प्रैक्टिसेस से, यानी कि जो एक प्रैक्टिस जो अकाउंटेंट करते हैं उनके द्वारा ये सजेस्टेड होते हैं और ये क्या है, सबके द्वारा एक्सेप्टेबल भी होते हैं और यूनिफॉर्मिटी के साथ होते हैं। इट मीन्स एक के जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है वो दूसरे अकाउंटेंट भी उस चीज़ को समझ सकते हैं। सेकेंड इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड बट फ्लेक्सिबल. इट मीन्स जब भी इसमें रिक्वायरमेंट होगी इसमें हम चेंजेस ला सकते हैं. Whenever a situation arises that requires solution, accountants arrive at a reasoned and reasonable decision which gradually becomes the accepted accounting principle. It must be kept in mind that accounting principles are not permanent and change with time. The third is accounting principles are generally accepted. Accounting principles are the basis and guidelines for accounting.
and are generally accepted. The general acceptance of an accounting principle usually depends on how it meets three criteria. First is relevance, second objectivity, and third is feasibility. Relevance. Accounting principles are relevant if they result in information that is useful to the users of accounting information. ये जो accounting principles हैं ये relevant होते हैं अगर इनके जो रिज़ल्ट हैं, जो भी इनकी इन्फॉर्मेशन है वो यूज़फुल होते हैं जो भी यूज़र्स है ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र्स. Second is objective. Accounting principles are objective if they are not influenced by the personal bias of the persons preparing the accounting information. ये जो अकाउंटिंग है वो ऑब्जेक्टिव्स होता है प्रिंसिपल्स. इसके जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये ऑब्जेक्टिव इन नेचर है. इट इज़ सपोर्टेड बाय फैक्ट्स एंड कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल बायस. द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द ट्रू फिनेंशियल पोजीशन ऑफ एन इंटरप्राइजेस. ये हमारे इंटरप्राइजेस के ऑर्गेनाइजेशंस की जो सही जो फिनेंशियल पोजीशन है उसे ये बताता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. Feasible. Accounting principles are feasible if they can be applied without undue complexity and cost. Feasible accounting principles are practical and feasible. This implies that they are guided by practical experiences and observations rather than theory. जो हमारा feasible है accounting principles क्या है, ये feasible होता है क्यों? बिकॉज ये practical aspects को और उसके observations पे ये मेड होते हैं, ये थ्योरी पे ज़्यादा बेस्ड नहीं होते. थैंक यू.